Assalamualaikum. I'm Kanzasha from University of Chakwal, Department of Zoology, 8th semester. Now I'm going to discuss about hagfish. I'm going to discuss about introduction, taxonomic classification, distribution, morphology, behavior, parental behavior, migratory behavior, importance, interesting fact related to hagfish, recent research insights. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हैगफिश हमारे पास लाइक स्कैवेंजर है विद यूनिक अडेप्टेशंस, प्रोड्यूस कॉपियस स्लाइम टू डेटर प्रीडेटर, रेस्पिंग टंग लाइक स्ट्रक्चर है फॉर फीडिंग ऑन डेड एनिमल। अगर हम इसके स्लाइम प्रोडक्शन की बात करें तो स्लाइम प्रोडक्शन रिमार्केबल डिफेंस मैकेनिज्म है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लीनिंग अप ओशन फ्लोर। हैगफिश बेसिकली अंडर स्टडीड ग्रुप है एनिमल्स का, स्टडीज़ पर रिसर्चेस हो रही हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की बात करें तो इट बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मैगजीनी, ऑर्डर मैगजीनिफॉर्म, फैमिली मैगजीना। नेक्स्ट अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दे फाउंड इन ऑल ओशन एक्सेप्ट द आर्कटिक। बेसिकली दे आर कॉल्ड benthic fish. It is also called bottom dweller. Mostly abundant in deep sea water, found in shallow waters. नेक्स्ट अगर हम इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इनकी बॉडी स्केललेस होती है, कोई स्केल प्रेजेंट नहीं होता। स्लाइम कवर्ड बॉडी फॉर डिफेंस एंड मूवमेंट, सिंगल डोर्सल फिन फॉर स्टेबिलिटी, बॉडी को स्टेबल रखने के लिए सिंगल डोर्सल फिन। माउथ की बात करें तो सर्कुलर माउथ विद टेंटिकल्स फॉर ग्रेस्पिंग फूड, नो पेयर्ड फिन्स। Basically, hagfish rely on body and dorsal fin for movement. They are primitive feature, but hagfish successful predator or scavenger. Next अगर हम इनकी behavior की बात करें, hagfish undergo vertical migration in water column, move between shallow water at night and deep water during day. इनकी पॉसिबल रीज़न क्या है माइग्रेशन की, तो फीडिंग और प्रीडेटर अवॉइडेंस। बेसिकली हैगफिश माइग्रेशन लिंक टू एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ऑक्सीजन, फूड अवेलेबिलिटी। द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड दिस माइग्रेशन आर स्टिल बीइंग रिसर्च्ड। नेक्स्ट अगर हम इनके पेरेंटल बिहेवियर की बात करें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन डीप वाटर, फीमेल में गॉड एग फॉर प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, external fertilization with possible parental care by female. नेक्स्ट अगर हम इनकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो हैगफिश हमारे पास डीप सी स्क्वेंजर है, क्लीन अप द ओशन फ्लोर, ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, प्रमोट द न्यूट्रिएंट साइकिल। बेसिकली हैगफिश आर ई लाइक क्रिएचर, दे प्ले वाइटल रोल इन कीपिंग डीप सी क्लीन. They consume dead and decaying organism, breaking them down into nutrient that organism can use. Hagfish slime has unique properties that are being studied for the potential of medical applications. As a primitive vertebrate, hagfish offer valuable insight into how our own bodies evolved. Next अगर हम इनके इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें, hagfish are fascinating living fossil with unique adaptation for their deep sea environment. अगर हम इसके स्लाइम प्रोडक्शन की बात करें तो स्लाइम is a powerful defense mechanism that make them difficult for predator to catch and eat. Hagfish play important role in marine ecosystem by cleaning up sea floor. They note itself to eat. Next, recent research insight की बात करें, recent studies on hagfish have revealed insight into their remarkable slime production mechanism. Basically, slime production mechanism है, ये डिफेंस mechanism भी कहा जाता है इसे। ये मूवमेंट के लिए भी स्लाइम को यूज़ कर रही है और रिमार्केबल डिफेंस mechanism, इसलिए इस पर recent research हो रही है. That's all about my topic. Thank you so much.